Good evening all. Welcome to Matrix DigiLearn. आज हम स्टार्ट करिबा इंग्लिश सेट नंबर 10. प्रीवियस क्लास रे हमर 9 सरी जेतिला. आज रो क्लास रे हम स्टार्ट करिबा सेट नंबर 10. Okay. Comes to question number 1. Question number 1 रहला choose the correct alternative to fill in the blanks. ता माने फर्स्ट देला हमर के फिलर देला. प्रथम क्वेश्चन फिलर देछि the bookseller does not have the books comma I was looking dash. ऑप्शन देछि देखो at about for to ता माने क्वेश्चन पढि के तुम बुझि पारथो क्वेश्चन देछि प्रीपोजिशनल फेयर. प्रीपोजिशनल आपन ता माने एटा प्रीपोजिशन पुट करिया पई कहला. प्रीपोजिशन आपनकर फिलर प्लेट देछि. ठीक अछि बिले. ओके ये देला प्रीपोजिशन फिलर. ताले क्वेश्चन देछि लुकिंग एटे लुकिंग सहित पिले हमर कोन हबो लुकिंग एट एटा क्वेश्चन आपन देछि कोन ना फेजल वर्ब पिले देला जे फेजल वर्ब एटे लुक सहित कोन हबो लुक एट लुक अबाउट लुक फॉर एवं लुक टू तीनटा का सेंस रे क्वेश्चन देला ता माने लुक एट हबो ना लुक अबाउट हबो ना लुक फॉर हबो ना लुक टू हबो कथाटा होछि. ओके ता माने लुकिंग सहित पिले एटे जदि हम देखिबा लुकिंग सहित एटे हमर यूज हबो पिले फॉर. लुक फॉर मतलब आपनकर देछि क्वेश्चन देछि a book seller does not have the books it was looking for. बुझलनि looking for मतलब जस्ट आपनकर सर्च मीनिंग आपनकर देछि. ओके then comes to question number 2. question number 2 रे देखा पिले देला question number 2 देला also आपनकर prepositional आपनकर filler देला. prepositional आपनकर filler देला पिले देख क्वेश्चन देला डिवाइड 12 मैंगोज डैश 3. डिवाइड 12 मैंगोज डैश 3 बॉयज. एटा डिवाइड 2 हबो नाही डिवाइड 4 हबो नाही डिवाइड बिटवीन और एमंग विथ डिफरेंस रहला कंफ्यूजन हमर एट रहला पले. ओके ताले एटा हम जानिबा केमिति जे बिटवीन सहित आपनकर डिवाइड सहित बिटवीन बसिबो ना डिवाइड सहित एमंग बसिबो. ओके क्लियर होछ बोले कथाटा पहिले देखो बिटवीन हमर मिनिमम 2 पई यूज करा जाय. मिनिमम नंबर 2 मतलब 2 पर्सन हेई पारे प्लेस हेई पारे बा थिंग्स हेई पारे जदि हम कंपैरिजन सेंस रे यूज करू छे बा मतलब टू थिंग्स विषय हम कहू छे ताला हम यूज करबा सबले कोन प्रीपोजिशन यूज करबा कोन बिटवीन यूज करबा. जदि मोर देन 2 प्लस रहबो पिले ताले से जगह हम कोन पिले यूज करबा से जगह पिले हम कोन यूज करबा ना एमंग यूज करबा. ताले देखिलाटे हमर क्लू कोन देछि 12 देछि ताले मोर देन 2 प्लस जदि मोर देन 2 प्लस रहिला ताले एटे बिटवीन हबो नाही एमंग इज द करेक्ट आंसर. एबे जरा डाउट रहिला कि ए कांसेप्ट भितरे कहार डाउट रहिला कि बिटवीन और एमंग भितरे डिफरेंस कि बुझी पाला ना बुझी पाला अरे क्लियर तो. देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 को पहले आसा. क्वेश्चन नंबर 3 देला चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक. क्वेश्चन देला इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम ही had eaten a square meal dash he had left the village. Okay it was for the first time he had eaten a square meal dash he had left the village. Okay ऑप्शन देला since हबो ना for हबो ना before हबो ना although हबो. since for before although बुझिला कथा. ताले क्वेश्चन को जदि हमें भलो कि जजमेंट पले करबा क्वेश्चन भितरे since पले कोन पई बसे हमें जानि छे sin ऑप्शन कथा जानि छे sin कोठे बसे ना पॉइंट ऑफ टाइम पई हमर यूज करा जाय कोन पॉइंट ऑफ टाइम को जदि इंडिकेट करबा ताले हमर बसिबा since. for का पे यूज हबो ना पीरियड ऑफ टाइम पे हमर कोन पले यूज हबो सोले for. ओके बिफोर हमें जानि छे बिफोर ता अपन टाइम सेंस रे यूज करबा एवं ऑल्दो आपनकर को केस रे हमर बसियो ना ऑल्दो ता सबले कॉन्ट्राडिक्शन केसेस रे बसे ऑपोजिट सेंस रे बसे कॉन्ट्राडिक्ट करिया पे हमर सबले यूज करा. बट क्वेश्चन भितरे हम जदि भलो कि देखिबा पिले क्वेश्चन भितरे किछि कॉन्ट्राडिक्शन ते आही प्रथम ये ऑप्शन को हमें एलिमिनेट करबा. सॉरी
ओके ए ऑप्शन को हमें एलिमिनेट कर दवा बिफोर बिफोर हमरो से वाला सिचुएशन मतलब कोन से इंसिडेंट को हमें जदी तार प्रीवियस मतलब टाइम इंफॉर्मेशन हमें दवा ताले से सेंस रे हमें सब यूज करबा बिफोर को ताले एठी आपनकर बिफोर मध्ये यूज हे परिबो ई भी भूले गेला क्लियर वर्तमान क्वेश्चन ऑप्शन भीतर रहला सिंस आउ फॉर सिंस को हमें पहले सब यूज करबा पॉइंट ऑफ टाइम सहित सिंस is always denotes point of time and for always denotes period of time okay since it denotes point of time and for denotes period of time okay ताले प्रश्न उठले एटा हमर जे पॉइंट ऑफ टाइम हबो ना पीरियड ऑफ टाइम हबो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम जदि पॉइंट ऑफ टाइम ताहले हमें यूज करबा सिंस जदि पीरियड ऑफ टाइम ताहले हमें यूज करबा कोन फॉर ओके ताले क्वेश्चन और सिचुएशन कहला इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम he had eaten square meal as he had left the village ताहले एटा देखो स्पेशली जदि कहिबा जे तू कोई चीज फॉर द फर्स्ट टाइम ताहले ये गोटे पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करूची ताहले एठी हमर आंसर प्ले कोन हे जिवो ना सिंस हे जिवो एठे फॉर हबो ना एठे आंसर कोन हे जिवो ना सिंस he had left the village क्लियर होची अरे कांसेप्ट बुझियला it was for the first time he had eaten a square meal since he had left the village clear होची okay then comes to next question choose the correct alternative to fill in the blank okay okay question dala his mother was 60 years old when she died his mother was 60 years old when she died option एठी कोन देला पिले had died was dying and has died his mother was 60 years old when she died option देला has died was dying was died has died ताले एठी आपनकर एप्रोप्रिएट आंसर कोन हो एठी एप्रोप्रिएट हम ऑप्शन का गु नबा हम देखिबा ताले एप्रोप्रिएट ऑप्शन हम का गु नबा ताले क्वेश्चन भीतर जदि देखिबा पिले एठी क्वेश्चन देछि हिज मदर वाज 60 इयर्स ओल्ड व्हेन माने सिचुएशन रो कथा कहिछि ताले एटा केबे कंटीन्यूएशन फॉर आपनकर फॉर्म हबो नै जेहेतु क्वेश्चन ऑलरेडी पास्ट रे देछि ताले हम प्रेजेंट रे भी रखि परिबा नै ताले आंसर रहला ए आउ बी भीतर गोटे सिचुएशन ऑलरेडी प्रूफ देइ सारिछि गोटे सिचुएशन विषय रे को होउछि ता माने गोटे सिचुएशन को जते हम नॉर्मल फॉर्म रिप्रेजेंट करूचे से केस रे केबे हमें परफेक्ट मतलब एक्शन हमर से केस रे आपनकर कोन हेतिबो कंटिन्यू आपनकर मतलब जो एक्शन ता अछि सेटा कंटिन्यू अवस्था रे हेतिबो एक्शन ता कंप्लीट हे नथिबो से सिचुएशन हमें परफेक्ट नै परिबा बट एठी आपनकर सेवला एठी दिछि हिज मदर वाज 60 इयर्स ओल्ड व्हेन शी डाइड ता माने गोटे सिंपल पास्ट रो कथा कहिछि ता माने एठी आपन आंसर हे जिवो बी इज द करेक्ट आंसर ताला एठी आपन आंसर कोन हे जिवो डाइड हे जिवो सिंपल पास्ट इज द करेक्ट आंसर अरे बुझि परछ ते आंसर हे जिवो हमर कोन ना सिंपल पास्ट हे जिवो क्लियर होची कथा देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 ओके क्वेश्चन नंबर 5 पे कोन देला देखो टिके भले क्वेश्चन को क्वेश्चन देला the meeting is dashed because the funds has not arrived yet the fund देखो एठी हमर कोन देला फेजल वर्ब दा put in put up put out put away the meeting is हला एटा नेगेटिव सेंस रे देला से कहूची आपनकर हम गोटे पिला जानि परिबो जे not arrived yet because the fund has not आपनकर because the fund has not arrived yet ता माने एटी सिचुएशन ता कोन हला जेतु आपनकर फंडिंग आसी पाला नै तब ऑब्वियसली आपनकर कोन कैंसिल और कैंसिल पे हमें कोन लिखिबा पुट ऑफ लिखिबा सो यार करेक्ट आंसर होची आपनकर बी पुट इन हबो नाही पुट आउट हबो नाही पुट अवे हबो नाही क्लियर ए पार्ट अरे बुझि पात ता माने एटा फेजल वर्ब देला द मीटिंग इज पुट ऑफ बिकॉज़ द फंड हैज नॉट अराइव्ड येट ओके क्लियर होची पार्ट ओके देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन then question number 6 question number 6
करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग इटे इनडायरेक्ट स्पीच रे हमें रिप्रेजेंट करबा इनडायरेक्ट स्पीच को हमें केमते रिप्रेजेंट करबा बी क्वाइट आई सेड टू देम बी क्वाइट आई सेड टू देम आई टोल्ड देम टू बी क्वाइट से पछाला एको जदि हम इनडायरेक्ट स्पीच रिप्रेजेंट करबा हला आंसर कोन हबो आंसर हबो पिले जदि हम देखिबा ए क्वेश्चन रे हम एंती कहि परिबा दुईटा फॉर्म हम रिप्रेजेंट करि परिबा मु कहि परिबी कोन द स्ट्रेंजर wanted to is said to जगह पाई यूज करि परिबी कोन wanted to ओके उन टू से तो सबले v1 फॉर्म हम यूज करिबा टू नो where I live ओके तो ये ही जो तारा करेक्ट आंसर सॉरी सॉरी इले क्वेश्चन एटे देइची बी क्वाइट आई सेड टू देम आई टोल्ड देम टू बी क्वाइट इति देइची ता माने एठे आपण मते देखिबा देख क्वेश्चन आंसर प्लेट देइ दीची सॉरी एटे देइची आई देला प्लेट सॉरी 1 मिनिट क्वेश्चन एटे देइथा आई देला आई पे सब्जेक्ट देला आई देखो एटे सेड टू पे ही आपनकर कोन यूज कला पले टोल्ड यूज कला एटा देम थिला पले देम रखिला एटा जेतु आपनकर एटा थिला कोन ना इंपेरेटिव सेंटेंस थिला एवं इंपेरेटिव सेंटेंस रे पिला में जानि छे सबले हमें कोन यूज करिबा ना 2 + v1 हम यूज करिबा ओके तो 2 + 1 जदि हमें v1 यूज करिबा तले एटा 2 थिला तापर जो सेंटेंस थिला ताको हमें कॉपी कर दवा बी क्वाइट सही है जो आपनकर करेक्ट आंसर क्लियर हो जी क्लियर ये कांसेप्ट बुझियला ओके देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन ए सेंटेंस को हमें केमती सॉल्व करिबा करेक्ट द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग ओके क्वेश्चन देखा स्टार्ट करिछि कोथरे देछि वेयर डू यू लिव वेयर डू यू लिव वेयर डू यू लिव आज द स्ट्रेंजर हम बिगिन को आनिबा देखट देछि द स्ट्रेंजर एटा आज देछि तरे आज पई मु लिखिली वांटेड ओके एठे लिखिली वांटेड टू नो एठे आपनकर एठे लिखि पारि आज वांटेड टू नो एठे लिखि पारि एठे डब्ल्यूएच वर्ड देछि डब्ल्यूएच वर्ड मात्र डब्ल्यूएच वर्ड आपनकर कॉपी हला एठे जो को देछि जो आपनकर यू लिव तारे एटा को लिखि पारि आई लिव सो ये ही जो आपनकर करेक्ट फॉर्म क्लियर हो छी ओके ये जो कांसेप्ट को हमें कोन कहूचे रिपोभिया रे आपनकर क्वेश्चन दबो मतलब आपनकर डायरेक्ट स्पीच रे ताको तला हमें कन्वर्ट करबा इनडायरेक्ट स्पीच को तो बेस्ट ऑप्शन होची तमरो रिपोभिया देखो मु कोन कहली पहले फर्स्ट मते दरकार रिपोर्टिंग वर्ब ये हे गला तमरो रिपोर्टिंग वर्ब देन होची कंजक्शन देखो ये हे गला आपनकर कंजक्शन देन तमरो हे गला तो प्रोनाउन एटा देखो आपनकर प्रोनाउन फॉर्म रे बसिची आगे नहीं देन तमरो रहिला वर्ब एटा देखो अछि ओके स्ट्रक्चर आपनकर सैटिस्फाई होची ये होची आपनकर कांसेप्ट रो तरीका क्लियर होची कांसेप्ट हम केमती कहली सॉल्व करी क्वेश्चन देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द एरर इन द पार्ट्स ए पार्ट रे हमरो कोठी एरर अछि फाइंड द एरर इन द पार्ट प्रथम दला ए रे दला द कैटल्स entered the garden find the error in the part ऑप्शन दला द कैटल्स entered the garden या क्वेश्चन देछि बुझुची या यो क्वेश्चन भीतर देछि या को हमको कोन करिया पे पडिबो पिले या को हमको कोन करिया पे पडिबो या भीतर फाइंड आउट करिया पे बट कांसेप्ट होची या दिस द कैटल्स एटे पिले द कैटल्स हम यूज करि परिबा कि तो भूल गेला ओके काहे के ना कैटल हमर मोर कहया मतलब होची किछि नाउन अछंती जो माने सब बेले सिंगुलर फॉर्म रे फॉलो रुहंती एवं प्लुराल मीनिंग को डिनोट करंती बुझला त कागो डिनोट करंती प्लुराल मीनिंग को डिनोट करंती एवं बुझला ना नहीं ता माने तो कैटल एवं ए सब बेले कहा को फॉलो करबा ना प्लुराल वर्ब को फॉलो करबा
जरा देखो एठी पिले एठी देछि आपन को द कैटल एको हम सब बेले सिंगुलर फॉर्म में रखिबा प्लूरल मीनिंग को डिनोट करिवो ताले एटा प्लूरल के रखि परिबा कि इतबे हम कोन करिया पे पड़िबो ना कैपिटल्स करिया पे क्लियर होची कांसेप्ट ओके देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द एरर इन द पार्ट ओके ताले ए पार्ट रे पिले हमर को पार्ट रे आपन को एरर अछि हम चेक करिबा देखो क्वेश्चन कोन देला बिसाइड चॉकलेट they also bought many toys and sweets for the children ଗୋଟେ ଭଲ କନସେପ୍ଟ କହୁଛି ମନେ ରଖ କଣ କନସେପ୍ଟ ପିଲେ ପିଲେ ବିସାଇଡ ର କଥା କହୁଛି beside means by the side beside means by the ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ମୁଁ କହିବି besides ର means होची in addition to okay beside means by the side and besides means in addition to okay ताले पिले एटे देखो देछि beside chocolate हबो ताले एटा भूल गेला ताले एटे कोन होबा कथा पिले besides होबा कथा besides chocolate they also bought many toys and sweets for children दुईटा जिंस कथा कहला टॉयज हम आपनकर स्वीट्स को छाड़ी से मध्य कोन चॉकलेट ओके बिसाइड चॉकलेट को छाड़ी के से टॉय हम आपनकर स्वीट्स आपनकर पिलांग पइना तो एठी आपनकर को सेंस रे आसीबो एठी आसीबो इन एडिशन टू सेंस रे आसीबो ये होची आपनकर कांसेप्ट अरे बुझी पालो क्लियर होची कांसेप्ट हम कोन कहली एठी कांसेप्ट कोन दिला क्वेश्चन में कांसेप्ट कोन यूज कला ओके देन कम्स टू next question number 10 okay question number 10 dela find the error in the part no sooner had he began when the opposition started no sooner had he began when the opposition started क्या दीजिए ताले क्वेश्चन में हमें गोटे जिंस जानि छे जे नो सुनर को हम यूज करू छे प्रथम ये रहबो आपनकर ऑक्सिलरी वर्ब तो ऑक्सिलरी वर्ब सब बेले पिले फॉलो करिवो काहा को ना आपनकर सब्जेक्ट को ओके ता माने ए जो पार्ट रहिला ए पार्ट रे हम देखिबा इते देखो देछि ही बिगन एक्चुअली ई जिंसटा को हमको रिवर्स करिया पे पड़िबो ता माने ए पार्ट रे ही आपनकर भूल अछि ताले यही जो आपनकर करेक्ट आंसर ये आपनकर होई परिबो नहीं ये आपन होई परिबो नहीं आउडे कथा बुझिला ना नहीं ई जिंसटा को सब बेला में ध्यान दबा क्लियर होची किंतु मो हिसाब रे जदि मु पिले देखिबी क्वेश्चन भितरे आउ गुटी जिंस मध्ये भूल अछि कोन देखा पिले नो सुनर एटे क्वेश्चन भितरे देला किंतु क्वेश्चन भितरे हम जानि छे पिले नो सुनर पिले काहा को फॉलो करे नो सुनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय दैन ना नो सुनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय दैन ये होची आपनकर कांसेप्ट पढ़ी जाय गोटा हम जानि जाय करो जे नो सुनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय दैट तो ए जिंस को हम डायरेक्ट एते प्राइमरी मिस्टेक धरिबानी यदि हम ग्रामेटिकल सेंस रे देखिबा ताले नो सुनर आपनकर दान को फॉलो करिया उचित सो सी इज जो आपनकर करेक्ट आंसर काना यू वेंट आपनकर कोन होबो बिले दान बिकॉज़ नो सुनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय दान अरे क्लियर होची देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन देला पिले find the error in the part एठी कांसेप्ट पिले कोन अछि दिके देखो एठी कांसेप्ट कोन अछि ओके हमें जानि छे कांसेप्ट जे one of is always followed by plural noun and plural noun is always followed by singular verb ओके तो क्वेश्चन भीतर देखो एटा पिले दला one of एठे देला आपनकर प्लुरल नाउन एठे देखो verb दला लीव हां कि नहीं ए जगह रे सॉरी ए जगह रे आपनकर जो क्वेश्चन देला पिले गोटे मिनिट ये जगह कांसेप्ट जदि हम देखिया पिले देखो ये जगह आपनकर कांसेप्ट कोन देला वन ऑफ देला ये देला आपनकर प्लुरल नाउन ऑलवेज फॉलोड बाय आपनकर सिंगुलर वर्ब एटा चूज हबो नाही पिले चूजेस हे जो एटा जो आपनकर सिंगुलर और सी पार्ट रे आपनकर एटा होई परबो ओके बुझला क्लियर ए पार्टटा काई ना हम कांसेप्ट कोन जानि छे कांसेप्ट हमको आगुर जणा अछि पिले कोन जणा अछि जे one of is always followed by plural noun
and plural noun is always followed by singular noun. ये जाउची आपनकर concept clear होची. One of is always followed by plural noun and plural noun is always followed by singular noun. That is the concept. Clear होची. Okay. Okay. Comes to question number 12. एठा मध्ये पचारला find the error in the past. ए पार्ट रे एरर हमर को पार्ट रे अछि देखो क्वेश्चन भीतर देला दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्प यू इन केस ऑफ इमरजेंसी. ओके दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्प यू इन केस ऑफ इमरजेंसी. क्वेश्चन या देला क्लियर. ताले ए पार्ट रे हमर को सेंस रे एरर आपन कर यूज होई जे हम क्वेश्चन को अलग एनालिसिस करबा ताले ए पार्ट रे हमर पिले कोन ना प्रीपोजिशनल पार्ट रे आपन घरटा फाइंड आउट करे काहे कि क्वेश्चन भीतर देखो देला लुकिंग ए पार्ट देला लुकिंग एटा देला फॉरवर्ड एटा देला टू. आमे जानि छे जे फ्रेज हमर फ्रेज फॉर्म रे आपन को दउची लुक फॉरवर्ड टू या परे सबले आपनकर पिले कोन बसिबो ना जेरंड बसिबो और जेरंड रो मतलब पिले आपनकर कोन ना VING फॉर्म. अरे बुझियला ताले टिके देखो पिले ई पार्ट रे टिके भलो कि देखो लुक फॉरवर्ड टू परे आपनकर जेरंड बसिबो जोटा कि वर्ब रे आपनकर ING फॉर्म बसिबा कथा. क्लियर होजी. ताले एटा जो हेल्प अछि ताले एटा पिले कोन हे जिवो रे हेल्पिंग हे जिवो. अरे बुझियला ताले जो हेल्प ता अछि ता पिले कोन हे जो हेल्पिंग हे जिवो ताले हेल्पिंग ता कोन के पिले आपनकर जेरंड ना. अरे कांसेप्ट बुझियला ताले हमर को पार्ट रे पिले भूल थिला सी पार्ट रे भूल थिला. कांसेप्ट जणा पला कोन कांसेप्ट कोइ जदि हमर किछि फ्रेजेस अछि जिंदे हम कोइ पेरा विथ ए व्यू टू लुक फॉरवर्ड टू गेट रीड ऑफ गिवन बाय टेकन बाय की टू पूरा सब आपनकर जेरंड को फॉलो करिवो. जेरंड को फॉलो करियो मतलब वर्ब रो फॉर्म ता सबले कोन होबो ना ING तो हमें जेरंड बोली कहया पढा आइतला वर्ब चैप्टर मने पडुची कांसेप्ट. ओके देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 रे पिले कोन देला देखो क्वेश्चन नंबर 13 देला आइडेंटिफाई द सिनोनिम नादिर. आइडेंटिफाई द सिनोनिम नादिर. अरे नादिर जो सिनोनिम देला सॉरी नादिर जो वर्ड देला तार सिनोनिम हमर कोन कोन होई परिबो सेटा को हमको चूज करिया पे पड़िबो जे नादिर रो सिनोनिम कोन हो बुझुची. ओके ताले नादिर रो सिनोनिम जदि हम देखिबा नादिर रो सिनोनिम हमर कोन कोन पॉसिबल होई परिबो. दैट इज द पॉइंट. नादिर हमें सिनोनिम दबा ताले कोन कोन नहीं परिबा. फर्स्ट कथा रे बुझियला प्रथम देला asylum death heaven and zenith. asylum death heaven and zenith. अरे बुझी पारुछ क्लियर ए पाटा ताले नादिर रो एक्चुअली प्ले जदि हम देखिबा नादिर रो मीनिंग कोन एक्चुअली जदि हम देखिबा व्हाट डू मीन बाय नादिर. नादिर रो मतलब जदि कहि पेले याको हम कहि परिबी अनसक्सेसफुल ओके point in a situation okay nadir means unsuccessful point in a situation that is known as nadir. Okay and second is that zenith what word आपनकर अछि प्लेट zenith रो मतलब होछि प्ले आपनकर टॉप पोजीशन. क्वेश्चन एटे पचारछि आपनकर सिनोनिम पिले पचारछि जदि सिनोनिम पचारछि ताले एटे नादिर रे जदि कहबी अनसक्सेसफुल आपन सिचुएशन ये मध्ये टॉप को इंडिकेट करूछि आसलम ये मध्ये टॉप को इंडिकेट करूछि ताले आंसर पिले कोन हे जिवो ना डी हे जिवो. यार सिनोनिम पचारछि नादिर मतलब अनसक्सेसफुल पॉइंट इन ए सिचुएशन ताले एटे आपनकर हे जिवो कोन ना डेप्थ बुझला त जदि हम काको कहि परिबा एटा होछि पिले लोअर पॉइंट याको हम कहि परिबा लोअर पॉइंट ताले लोअर पॉइंट आ नादिर जदि हला ताले ये टॉप को इंडिकेट करूछि ये भी टॉप को इंडिकेट करूछि ये भी आपनकर टॉप पोजीशन को इंडिकेट करूछि.
ये टॉप हे परियो ये टॉप हे परियो ये वाला टॉप हे परियो तामने एही पार्ट आपनकर कोन होची लोअर पॉइंट दैट्स व्हाई आंसर इज डेप्थ क्लियर होची डेप्थ मींस आपनकर कोन हे परियो नादिर नादिर रो मतलब होची लोएस्ट पोजीशन asylum heaven okay then your zenith this word represents top position are clear hoची concept ठीक है then comes to next question identify the synonym proximity identify the synonym promiscuity promiscuity रो मतलब पहले कौन एक्चुअली व्हाट डोंट बाय promiscuity हमें जानिया कि promiscuity रो मतलब कौन वर्ड पचाला promiscuity प्रथम टर्म दला पहले promiscuity आपनकर एटा ऑप्शन दला प्रोफिलाक्सी या मीनिंग होची पहले आपनकर कोन ना वेस्टफुल कंजर्वेटिव व्हाट डोंट बाय कंजर्वेटिव रो मतलब होची आपनकर traditional value that is known as conservative puritan माने कोन व्हाट डोंट बाय puritan believe in hard work believe in hard working okay ताको हमें पहले कोन कहबा believe in hard working that is known as puritan okay conservative means traditional value profligacy means wasteful and chastity chastity meaning what do you mean chastity chastity means होची आपण the state of refraining the state of refraining from external affairs ताले एटा आंसर हे जो पहिले आपनकर कोन ना प्रोफिलाक्सी जे वेस्टफुल यार मीनिंग कोन हे जो पहिले ताले ये ही परिबो नाही ऑप्शन ये ही परिबो नाही ऑप्शन ये ही परिबो नाही ऑप्शन ताले आंसर हे जो आपनकर प्रोफिलाक्सी यार आंसर हे जो पहिले आपनकर कोन ना प्रोफिलाक्सी बुझु जी कांसेप्ट आर क्लियर then comes to passage हम पैसेज को जीवा पहिले पैसेज को थरे रीड करो पैसेज रो क्वेश्चन सॉल्व करिया पूर्व हमें क्वेश्चन को अगर थरे रीड करिबा एवं तापे क्वेश्चन सॉल्व करिबा सो फर्स्ट रीड डाउन रीडिंग करो मॉडर्न लिविंग हैज प्रोग्राम्ड आवर लिव्स टू ए hectic monotonous schedule that we have forgotten that gentle smile that once flicked across the human face smile has the power to dissolve all worries it has all the perceived ability to lift us from the abysmal depth of the gloominess we should not be cowed down by the work pressure that a constant frown imprisons our face inbuilt confidence and positive attitude help smile to blossom a face bereft of smile make us unarmed for it is the smile that is a pleasant weapon which resists all hurdles and problems that depress us if we learn to smile in crisis it shows that we have the forbearance and courage to face the crisis a smile after all help us preserve us our perfect present unmindful of our past or future okay so comes to first question what is mean by programmed our lives option dela we have set a mechanical routine we like to become software engineers we give various programs we give a set of instructions which option is correct what is meant by programmed our lives we have set a mechanical routine we like to become software engineers we give various programs we give a set of instructions ताले एठे आपण गोटिए टर्म विषय आपनकर कहितला क्वेश्चन भितरे गोटिए टर्म भितरे कहितला सी ऑप्शन टिपिले कोन होउची दैट इज योर मेकानिकल रूटीन जो विषय आपनकर कहितला स्टेटमेंट
सो ए इज द करेक्ट आंसर एटे कोनोसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर कथा कहिनी ए स्टेटमेंट रे कोनोसी प्रोग्राम्स कथा कहिनी ए सेंटेंस रे कोनोसी इंस्ट्रक्शन कथा कहि नै केवल गोटे कथा कहिची ना आपनकर मेकानिकल रूटीन्स दैट्स व्हाई इज द करेक्ट आंसर दैट इज द फॉर्मल पैसेज ओके क्लियर होची कोन क्वेश्चन देथिला ओके देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन कोन देछि पढो क्वेश्चन को क्वेश्चन देला which of the following statement is not true in the context of the passage which of the following statement is not true in the context of the passage कोटा ठीक नो कोटा context of the passage रे passage हिसाब रे को आपनकर ऑप्शन टी संपूर्ण रूप ठीक नो ओके जदि हम देखिबा प्रथम ऑप्शन देखि if we do not smile we are ruining our parents if we do not smile we ruining our present second if you smile we are mad see the frown on our face is an indication of the stress and D confidence and optimism helped us to be cheerful which option is correct ऑप्शन में देखो गोटी ऑप्शन देथिला प्ले हमर रुइनिंग रो कथा देई नाही the frown of the face indication of the stress विषय कोटे को आइनी confident optimism help to become cheerful बुझिला इठी हमें जदि देखिबा क्वेश्चन भीतर आपनकर ए कॉन्फिडेंस आ ऑप्टिमिज्म विषय आपन कोटे चेयरफुल कथा कहैनी तो गोटे कथा कहैछि इफ यू आर स्माइल हला हमें कहि परिबा वी आर मैड जे हसुछ तुम लोग कहबे पागल को ई विषय आपनकर कोनोसी जगह रे कोआ जाय नाही तो आपनकर आंसर हबो एठी आपनकर आंसर इट नॉट ट्रू कहिछि बट एटा ट्रू नो ए ऑप्शन टी आपनकर क्वेश्चन हिसाब रे ठीक अछि बुझिला देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन बर्तर दला ऑथर रो ऑब्जेक्टिव एटा सब डिफिकल्ट पार्ट पले ऑथर रो ऑब्जेक्ट को हम डिसाइड केमति करिया उस पैसेज हिसाब रे ए पैसेज रे स्पेशली कोन एटा देखि ऑथर्स मेन ऑब्जेक्टिव इन राइटिंग द पैसेज सीम्स टू बी द ऑथर रो मेन ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करिया पे कहला प्रथम ऑप्शन देला टू वार्न अस ए डल फ्यूचर टू हाईलाइट द इल इफेक्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स to enhance our skill of time management to unfold the healing power of a gentle smile चारटा ऑप्शन देला पिले प्रथम ऑप्शन देला टू वार्न अस ऑफ ए डल फ्यूचर सेकंड ऑप्शन देला टू हाईलाइट द इल इफेक्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स थर्ड इज सेज द टू एनहांस आवर स्किल ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड डी इज टू अनफोल्ड द हीलिंग पावर ऑफ ए जेंटल स्माइल चारटा सिचुएशन रो कथा कहला एम से चारटा जो सिचुएशन रो कथा कहला से चारटा सिचुएशन रो को ऑप्शन ना आपन ठीक बुझिया ताले एठी कोन हबो कोटा ठीक हबो टू वार्न अस ए डल फ्यूचर ये भूल गेला टू हाईलाइट द इल इफेक्ट्स ऑफ द कंप्यूटर ये भूल गेला टू अनफोल्ड द हीलिंग पावर एटा भूल गेला ताले टू एनहांस द आवर स्किल ऑफ टाइम मैनेजमेंट दैट इज द करेक्ट वन गोटे पॉजिटिव जिंस जे कहितो टू वार्न एटा वार्निंग कथा कोनसी ए पर्टिकुलर पैसेज रे वार्निंग करा हैनी दैट इज इनकरेक्ट टू हाईलाइट द इल इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर सेटा स्पेशली आपनकर इल इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर विषय में कोइनी ऑथर से विषय सजेस्ट करि नांदी टू अनफोल्ड द हीलिंग पावर ऑफ जेंटल स्माइल एटा स्माइल आपनकर नेगेटिव जिंस अनफोल्डेड केस विषय को आइनी ता माने एठे केवल गोटे जिंस रिमार्क दिहाई जेटा हम सॉल्यूशन रे से कहिसेंती कोन टू एनहांस आवर स्किल ऑफ टाइम मैनेजमेंट एटा गोटे जिंस पॉजिटिव विषय रे आपन कहिला जे तमरो स्किल को तमरो टाइम हिसाब टाइम मैनेजमेंट हिसाब डेवलप करि चल ताले तुम सक्सेस पाइबो ओके तो ये होची आपनकर ऑथर्स मेन ऑब्जेक्टिव बुझी होची नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा पैसेज रो नेक्स्ट क्वेश्चन पिले देला स्माइल क्वेश्चन देला स्माइल इज रेफर्ड टू एज अ प्लीजेंट वेपन बिकॉज़ से कहला स्माइल इज रेफर्ड टू एज द प्लीजेंट वेपन कोन पे हम स्माइल को प्लीजेंट वेपन बोले कहू रीजन कोन ऑप्शन देला पिले इट इज हार्मफुल it depresses the hearts it helps overcome our problems it is painful which option is correct definitely जदि गोटे पॉजिटिव रो कथा कहिछि पॉजिटिव ही आंसर आसीबो डेफिनेटली गोटे प्रेजेंट आपनकर कथा कहिछि पॉजिटिव रो कथा कहिछि ता माने हार्मफुल के बहि परिबो नै एठे आपनकर फिरिस द हार्ट ये गोटे नेगेटिव हि परिबो नै ओके ये पेनफुल हि परिबो नै बट हम जदि कहिबा ओवरकम आवर प्रॉब्लम्स ता माने एटा गोटे पॉजिटिव सेंस को इंडिकेट करूछि
जेतु पॉजिटिव सेंस को इंडिकेट करूचे ताले ये पॉजिटिव सेंस रो कथा कहला हम डायरेक्टली इंडिकेट कर परिबा दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन ओके ताले एठा आपन को रहि जबो करेक्ट आंसर किंतु इंडिकेट कली बुझी पालो क्लियर ए पार्ट ता देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन पैसेज रे आउट क्वेश्चन पले पचारे सेटा प्राय पैसेज रे पचारे कोन चूज द टाइटल मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑफ द पैसेज ताले जो पैसेज दे आइतला तार एप्रोप्रिएट टाइटल ता कोन हबो टाइटल ऑफ द पैसेज ऑप्शन देला गेम ऑफ लाइफ मॉडर्न लिविंग क्राइसिस मैनेजमेंट एंड इफेक्ट ऑफ द चीयरफुल लिविंग व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट जदि हम देखिबा उडे गेम ऑफ लाइफ यह आपनकर हबो नाही भूल ही जीवो मॉडर्न लिविंग कथा एटे क्वा जाय नाही क्राइसिस मैनेजमेंट रो क्वाई छी बट क्राइसिस मैनेजमेंट रो क्वा जाय नाही तो आंसर इज इफेक्ट ऑफ चीयरफुल लिविंग केमिति हमें खुशी रे बंचीबा जीवन शैली विषय रे आपनकर ए पैसेज भितरे इंडिकेट कराई छी सो दिस इज द टाइटल जदि हम देखिबा गेम ऑफ लाइफ केबे हमें कोइ परिबो उडे लाइफस्टाइल को नै रिप्रेजेंट कराई छी हमें केबे गोटे मतलब गोटे सिनेरियो रे हम देखिबा तब गेम ऑफ द लाइफ हम कोइ परिबा ओके इट्स इनकरेक्ट वन मॉडर्न लिविंग केवल लिविंग विषय रे कहै मॉडर्न लिविंग विषय रे कहै हमर जीवन शैली विषय रे कहै छी तनु बहुत आपनकर पार्ट रहिबो तनु हम स्पेसिफाई कर परिबानी मॉडर्न लिविंग सो दैट इज इनकरेक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट प्रथम कथा ए टाइम रो सेंस रो कथा कहै छी क्राइसिस रो कथा कहै नाही टाइम से मैनेजमेंट कथा कहै छी ओटा फैमिली मैनेजमेंट कथा कहै छी मनुष्यर फैमिलियर जिंस विषय इंडिकेशन है हम क्राइसिस मैनेजमेंट हम कोइ परिबा नहीं सो दैट्स व्हाई आंसर इज इफेक्ट ऑफ चीयरफुल लिविंग ओके दैट इज द स्टाइल ऑफ योर लाइफ याकू इंडिकेट करि परिबा हम इफेक्ट ऑफ चीयरफुल लिविंग दैट्स व्हाई द ऑथर सजेस्ट दैट दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल इन द पैसेज ओके बुझिउजी क्लियर ए पार्ट देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन next question there are direction in the following 6 sentences the first and the sixth sentence are numbered as 1 to 6 and the second third and fourth and fifth sentence are not proper sequence numbered as the p q r s select the correct sequence of these four sentence from the responsive given the below तामने indirectly प्ले एठा हमको कोन कहला जे क्वेश्चन को आपन को कोन करिया पे पडिबो प्ले सजेया पे पडिबो क्वेश्चन को कोन करिया पे पडिबो ना सजेया पे पडिबो ओके ता माने एठे हमें जदी पैराजम्बल कथा डायरेक्ट इनडायरेक्टली कहला एठी ये होछि पले आपनकर पैराजम्बल रो क्वेश्चन पैराजम्बल फॉर्म रे आपन हम सिलेक्ट करिया पे पडिबो ओके पैराजम्बल मतलब होछि आपनकर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस क्वेश्चन हमें सजेबा पले एटा ऑप्शन आपनकर देछि द कांसेप्ट ऑफ वन वर्ड इज वेरी ओल्ड Ernest effort, however, where देखो पहले ऑप्शन देला however Ernest efforts, however, were made only after the First World War when the League of Nations was set up. This organization also has not achieved much success. It proved a failure as it would not avenge the Second World War, which resulted in the formation of UN organization. Mankind has been thinking about it from the time immemorial and the goal appears to be as far as hundreds years ago okay जदि क्वेश्चन भितरे पिले देखो देइची एको हमें जदि फास्ट सजेइबा ताले हमें फास्ट कोटा को रखिबा फास्ट का को रखिबा क्वेश्चन भितरे हमें फास्ट का को प्रथम देला हाउएवर एको हमें यूज करि परिबा नाही एको हमें एलिमिनेट करबो क्वेश्चन देइची दिस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो पिले एको हमें बिगिनिंग रे नै परिबा नि भूल आल्सो देइची क्वेश्चन देइची इट प्रूव प्रोनाउन देइची याको मते बिगिनिंग नै परिबा ना द गोल अपीयर्स टू बी हैज एट फार एज 100 इयर्स एगो एटा को मते हमें बिगिनिंग रे यूज नै परिबा ना ओके ता माने कहा कथा दे बेसिकली आपन करे पैसेज रे कहा को इंडिकेशन कराइची ना मैनकाइंड को इंडिकेशन कराइची तो जदि मैनकाइंड को इंडिकेशन कराइची ताला स्टेटमेंट रो बिगिनिंग रे मोर पिले के जीवो ना एस जीवो जदि एस बिगिनिंग रे मु चूज करी कला गोटी ऑप्शन रे आपन कर एस रे आपन कर बिगिनिंग रे अछि गोटी ऑप्शन रे आपन कर एस बिगिनिंग रे अछि दैट इज बी सो दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर गोटी ऑप्शन रे एस बिगिनिंग पोजीशन रे अछि दैट इज एस जोटा कि आपन बी ऑप्शन रे अछि दैट्स व्हाई मु कहि परिबी बी इज योर करेक्ट आंसर अरे बुझियला क्लियर ए पार्ट क्लियर होछि अच्छा सेकंड जदि मु सजेबी जदि स्टेटमेंट को मु सजेबी फर्स्ट तला मैनकाइंड हैज बीन थिंकिंग अबाउट इट फ्रॉम द टाइम देला इन मेमोरियल प्रथम कथा देला जदि सेकंड पार्ट को सजेबी देखो
earnest effort were made only after the first world war. It is from about the time immemorial. बहु आह्वान कथा कहैछि हमने कहा कथा कहैछि the first world war when the League of the Nations was set up. जेते बेले League of the Nations आपनकर कोन हेतला ना सेट अप हेतला. Earnest effort however were made only after the first world war when the League of the Nations were set up. जब सेट अप हेतला सेकंड सेट आपनकर असला एस पर असला पी. Then comes to ताले जो सेटअप करा गला जदि हम कथा कहबा जो लीग ऑफ द नेशन करा गला देन आसीबा आपनकर इट प्रूव्ड ए फेल्युअर. एटा फेल्युअर हेछि सेति पई आपनकर कोनला सेकंड वर्ल्ड वॉर व्हिच इज रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. केमति हम लिंक कले earnest effort however made only after the first world war when the League of Nations was set up. एक कंडीशन आपन को सैटिस्फाई कर ता माने सेकंड पार्ट रे कोन कला फेल्युअर टर्म जदि एटा फेल्युअर हैला दैट टू बी earnest effort. ओके जदि एटा फेल्युअर है इट टू बी प्रूव्ड रिजल्ट हम शो कला. ओके तो सेकंड रिजल्ट आपन को कोन आसिला सेकंड पार्ट रे आसिला आपन को सेकंड वर्ल्ड वॉर व्हिच इज रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूएन. तो यूएन फॉर्मेशन आपन थर्ड कथा the goal appears to be as far as 100 years ago. ओके डायरेक्टली एटा नहीं परिबा. ओके बट जदि हम एटा जदि हम देखिबा लास्ट पार्ट रे दिस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो हैज नॉट बी अचीव सक्सेस. जो ए ऑर्गेनाइजेशन गठन करा गला यूएन आपनकर ऑर्गेनाइजेशन गठन करा गला ए ऑर्गेनाइजेशन कथा कहिछि ताले ए ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन को लिंक करि पारे ताले को ऑर्गेनाइजेशन कथा कहला ना दिस ऑर्गेनाइजेशन मतलब ए यूएन कथा कहिछि यूएन ऑर्गेनाइजेशन आल्सो हैज नॉट अचीव्ड मच सक्सेस. बुझला देन आसीबा आपनकर ताने फर्स्ट आसीबो एस देन इज योर पी देन इज योर आर देन इज क्यू. सो दिस इज योर पोजीशन. क्लियर ताले हमर लिंक कोन हे जिवरे पिली ताले लिंक हे जिवो आपनकर बी इज योर करेक्ट आंसर. बुझियोची क्लियर ए पार्टटा ना डाउट अछि पिया पार्ट भीतर कार क्लियर ए पार्टटा. ओके आज पई एति थाओ नेक्स्ट क्लास रे हम नेक्स्ट सेट डिस्कशन करिवा. हमर आज रो सेट कंप्लीट हे गला नेक्स्ट क्लास रे हम नेक्स्ट सेट कंप्लीट. ओके थैंक यू.